wholeheartedly welcome you, sir, for this symposium. We extend a warm welcome to Secretary DARE and Director General ICR, Dr. Himanshu Patel. We welcome Dr. S.K. Chowdhury, DDG NRF. We are happy to have our special guest, Padma Shri Dr. Arvind Kumar, former VC, Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi. I welcome Dr. B.S. Mahapatra, President of Indian Society of Agronomy, Dr. Shivdev, Organizing Secretary, ISA, and Dr. Praveen Kumar, Director, ICAR, Central Coastal Agriculture Research Institute, Goa. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. It's my privilege and honor to welcome Honorable Governor Sir in the inaugural function of the 22nd National Symposium of Indian Society of Agronomy. Honorable Sir, your kind and gracious presence will inspire the agronomists of the country. Your kind words of the guidance will pave the way to take forward Indian agriculture. We extend our heartiest welcome to respected Dr. Himanshu Patel ji, Secretary DARE and DGICR and Chairman of this function. We also extend our heartiest welcome to respected Padma Shri Dr. Arvind Kumar ji and guest of honor of this function. I welcome to respected Dr. S.K. Chowdhury ji, DDG NRF and guest of honor of this function. I also welcome Dr. B.S. Mahapatra ji, President of the Indian Society for Agronomy. The Indian Society of Agronomy hearty welcome to all dignitaries and delegates present in the function. We also welcome all the delegates and speakers of the symposium. We welcome you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. It's a matter of great pleasure for us that the 23rd Biennial National Symposium on Climate Smart Agronomy for Resilient Production Systems and Livelihood Security has been organized by the Indian Society of Agronomy, and I am grateful to all the members of the society, all the dignitaries of ICAR and the state agriculture universities for helping to organize this seminar at Goa, and particularly the director of Goa. Now, in the present day context, you will be listening to Honorable DG, Honorable DD Saab and His Excellency the Governor of Goa. But just I want to mention, for last 7 months, the society has worked very hard to bring all the agronomists, all the agronomists over here to talk about, discuss and disseminate the ideas what Goa Convention is going to do for the tomorrow's climate smart agriculture for higher productivity and sustainability. So I'm not going to take much time. I think this symposium will be a successful one to each and everyone. Every deliberations will be well heard, well documented and disseminated with this. Thank you very much. Thanks. We have to see how we can sustain and what resources we will need, how we can mitigate the adverse effect, and that is what would be held in next 2 days, and this 3 days symposium I think would be very meaningful for all of you, and we will be very glad to have the advice and blessings of our Honorable Governor and Secretary DARE and DGICR on this occasion. Thank you once and all. So far, Indian context is concerned, right from the beginning we were very clear. In Vedic days also, when we say Anna Dhvanti Bhutani Parjanyadan Sambhava, that time also it was very clear, 5,500 years back, we were very clear in mind that climate controls the rain, rain controls the food grain, and food grain controls the generations, not only human being, but all living beings, including animals. Therefore, considering that philosophy, now time has risen when we need to look at agroecological dimensions of agriculture perspective. And in that, names are varying. Today we call organic agriculture, call natural farming, call Vedic farming, or you may call regenerative agriculture, you may call conservation agriculture, you name it, anything. But ultimately, the global attempts are being made to address the ecology in terms of some less dependence on inputs, particularly chemicals, and therefore we require new pathways for that. The second dimension,
what I say is Parjanya Annasambhava. When Parjanya or climate or rain, it is beyond our control, and El Nino, La Nina, this kind of already we are witnessing many such kind of evidences are there, and these are affecting adversely the whole production system. And providing resilience to such fragile ecosystem is the biggest priority, and therefore it is the biggest challenge for all the agronomists. We have several targets. At the highest level, we want to achieve zero emission from all the sectors, including agriculture. We talk of adaptation, we talk of mitigation, we talk of co-benefits of mitigation, adaptation towards mitigation, everything we talk, but everything falls under this area. Therefore, it would be appropriate to discuss all these things, and please try to provide some kind of handle so that young talent, young people can get attracted towards the new science, and also using your wisdom, provide some flip to them so that they can pave a path of futuristic kind of economic studies in this country. My best wishes and all the very best to all of you. Thank you so much. Then finally, please change the scale and speed of agronomic research. It cannot be slow now. It cannot be small scale now. Climate is changing in much faster rate than the time in which you are developing your technologies. You have to be smarter than climate change. You have to be faster than climate change. And you have to be larger than climate change. So change the scale, change the speed, and change the intensity of agronomic research. With this, once again, I thank Honorable Governor for gracing this occasion, sir. Sir, your mere presence is a source of inspiration for all of us, for all the agronomists who are present in National. And thank you very much, all of you, for being here in such a large number. If these 500 agronomists decide in next 2-3 days to change the course of agronomic research, you can do it. You can do it. And that's what I expect. That's what the council expects. And that's what the government of India expects. I will be very, very eagerly looking forward for the recommendations which are coming out of these particular deliberations. And let me assure you, we will be taking your recommendations very seriously and try to implement as much as possible, as quickly as possible. I wish this particular event a grand success and wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind. Because I travel all the villages of Goa within these 2 years and visited farmers, including farmers, and I found that in Goa, barren land, agricultural land, what extent they are using. I'm not going to any controversy over that. I had occasion to look into coconut trees. You see, in Goa, for climbing a coconut tree, per tree, the climber can get more than 100 rupees. An able-bodied person can do that job at least 50, 60 or 70 or up to 100 trees per day according to my for his inquisitive nature in me as an answer. Then you think about a youngster with an able-bodied body, how much he can earn per day. But in Goa, I'm not blaming Goa, but whether coconut climbers are freely accessible in Goa. Why in Goa agricultural land is concerned, majority are not using for agricultural operation. The trend is also legislation. Today morning also I discussed with the Chief Minister.
We had our breakfast together in my Raj Bhavan. And he asked what is to be done. He is also thinking in that line. This is one aspect. Then the question, I want to compare you on one aspect with Mizoram. Mizoram, you go through the per capita income, the poorest state in India. Out of the 28 states, their position is 26th or 27th. So, such a per capita income wise, they are in the lowest level. But my present state, Goa is concerned, per capita income wise, this is the first country, first state in our country. So, as per capita, if you are evaluating things in such a line, Goa is first. My present state is first. As far as per capita income or other income, the lowest state in India is Mizoram. When I travel through Mizoram, you see 2-3 states. When I visited there, a tar road, nobody had occasion to see a tar road in such areas. Ever in our life, they had occasion to see a tar road. When development is concerned, you imagine. But if you go through the 2020-21, that index of satisfaction. So, which state is in the top? Happiness index, not satisfaction. Happiness index, first state in the country in 2020-21 is still, I don't know, there is a change. Still, Mizoram is in the first position. Our state, Goa, top in per capita income, and my state is rich, but happiness index, their position, I don't want to go to that aspect. So this is the mindset of the people. Whatever may be the development we are doing, how it make the reaction in the people is a question mark. I am not trying to give an answer to that aspect. Anyway, you are the champions of development and other things. Indian Prime Minister, you see, Northeast states are 7 sisterly states previously. Now Sikkim is also added later. Then 8 states are there. There it is called sisterly states, Northeast. The total population of these 8 states is only 3.1% of the Indian population. They are entitled to get from the Union of India this 3.1 or 3.2 or 3.5 or anyway less than 4% of the total budget allotment amount of India. But Narendra Modi declared that no, Indian development without the development Northeast is not complete. So he allotted 10% of the total Indian income set apart for this Northeast states. So that is why our approach is always like that and given importance to those needy states, satisfy those needy states, and agriculture operation also. I think the mindset of the people may be taken into consideration. ये जो हमारा 3 दिवसीय एक हमारा नेशनल सिंपोजियम हो रहा है,
इसका मेन बिंदु है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए भारतीय कृषि को जलवायु अनुकूल कैसे बनाया जाए, उसके लिए जो भी हमारा एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, एग्रोनॉमिक मतलब जिस तरीके से हम पानी का प्रबंधन करते हैं, मिट्टी का प्रबंधन करते हैं, बाकी जो क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं, इसमें किस तरह का रिसर्च, किस तरह का एडुकेशन, किस तरह का एक्सटेंशन, प्रसार प्रचार किस तरीके से किया जाए, ताकि जो जलवायु परिवर्तन का जो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने अभी आ चुका है और आने वाले समय में जो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने वाला है, उससे हम किससे बचें। तो पूरी जो 3 दिन का सत्र है, आज तो इनागुरेशन हुआ जिसमें महामहिम राज्यपाल गोवा के आज हमारे बीच में थे, तो उनका संदेश भी हमें प्राप्त हुआ है। और आने वाले जो अभी शुरू हो रहा है इसमें हम एग्रोनॉमी का हर एक पहलू को देखने वाले हैं। किस तरीके से जो हमारा पारंपरिक खेती होता था, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम ओवरऑल नेचर फ्रेंडली फार्मिंग कहते हैं, उसका आज के दिन में क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसका फ़ायदा क्या है, और फिर जो नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खास करके जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का हम बात करते हैं, रोबोटिक्स का बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं, तो हमारे ये सोच है कि भारतीय कृषि में इसमें हमारा प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाना है ही है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जो है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये समस्या से भी हमें बचना है। और बचने के लिए हमें मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्च का ज़रूरत है ही है। साथ साथ जो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, उसको भी एक साथ एकत्रित करते हुए, इंटीग्रेटेड करते हुए चलना है। तो पूरे 3 दिन इसके बारे में अलग अलग पहलू पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो सोसाइटी का जो कार्यक्रम है, इसमें और 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक है कि जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं, हमारी जो सोसाइटीज़ है, इकोनॉमिक सोसाइटी उनमें से एक है, और भी कई सारे सोसाइटीज़ हैं, हम हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन देते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ताकि उनका मान सम्मान किया जाए और अच्छा से अच्छा रिसर्च वो आने वाले समय में वो करें। तो आज जैसे सुबह आपने देखा कि 3 जो हमारे बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक रहे, उनको जो है कि सम्मान दिया गया, और अभी जो सत्र होने वाला है उसमें और कुछ वैज्ञानिक, खास करके जो यंग साइंटिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स जो अभी MSc और PhD अभी ख़त्म किया है, अभी नौकरी का क्षेत्र में अभी वो प्रवेश ले रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए सोसाइटी ने कुछ अवार्ड्स का प्रबंधन किया है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, देखिए रिसर्च तो करता है हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, काउंसिल उसके देखभाल करते हैं, लेकिन समाज तक पहुंचाने के लिए और समाज का जो मुद्दा है, फार्मर्स का जो मुद्दा है, सोसाइटी का जो इशूज़ है, वो हमारे सोसाइटीज़ एकत्रित करके वो हमें बताता रहता है। तो सोसाइटी जो है कि एक ब्रिज का काम करते हैं, सोसाइटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, ये पूरे भारत में जो एग्रीकल्चर की जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सोसाइटी है, जिसमें 3000 से भी अधिक इसका मेंबर है। हर साल इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें नया रिसर्च क्या होना चाहिए, नया एडुकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श होता है। और फिर एक रिकमेंडेशन निकालते हैं पूरे प्रोग्राम के बाद, जिस रिकमेंडेशन हम जो है कि भारत सरकार को, हमारे NGOs को और बाकी जो भी संस्थाएं हैं, उन सबको हम देते रहते हैं, ताकि वो लोग इसके बारे में चर्चा करें, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो 3 दिन का जो कार्यक्रम है, खास करके गोवा में हो रहा है, और गोवा के कृषि के बारे में भी हम इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। हमारे एक सत्र रखा गया है जिसमें गोवा एग्रीकल्चर में क्या समस्या है, गोवा एग्रीकल्चर का पोटेंशियल क्या है, गोवा एग्रीकल्चर को अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरे चर्चा हैं गोवा एग्रीकल्चर के लिए और भारत कृषि के लिए, वो सबके लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसमें साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम रिसर्च जो भी करें, ये जब तक हमारे किसान भाई बहनों तक नहीं पहुँचेगा, आम जनमानस तक जब तक नहीं पहुँचेगा, तब तक ये अधूरा है। और वो काम आप करते हैं, मीडिया करते हैं। तो मीडिया को हम जो है कि हमारी जो रिसर्च का उनका एक अभिन्न अंग मानते हैं। आपके साथ मिलकर ही हम ये सारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
पहले सत्र में भी रहे और बाकी अभी जो आप इंटरव्यू इसको लेकर के आप समाज के जनमानस तक पहुंचाएंगे, तो पूरे ऑर्गेनाइजर जो है सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और भारत सरकार की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। नमस्कार। मी सुरेश चौधरी, मी नवी दिल्ली स्थित भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमध्ये उपमहाधीक्षक म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टर जनरल या पदावर मी तिथे कार्यरत आहे। आज इथे गोव्यामध्ये 3 दिवसाचं हे अधिवेशन भरलेलं आहे। अधिवेशन म्हणजे हे राष्ट्रीय सिम्पोजियम आहे आणि हे 3 दिवसपर्यंत चालणार आहे। राष्ट्रीय पातळीवर सस्य विज्ञान शास्त्राची एक सोसायटी आहे। देशातील ICR संस्थांमध्ये या व्यतिरिक्त राज्य पातळीवर असलेले कृषी विद्यापीठं आणि या व्यतिरिक्त आणखीही काही प्रायव्हेट संस्थान आहेत जिथे ॲग्रोनॉमिस्ट काम करतात। त्या सर्व ॲग्रोनॉमिस्टनी मिळून एक म्हणजे सोसायटी कायम केलेली आहे। त्या सोसायटीमध्ये दर 2 वर्षाला हे एकत्र येतात आणि नवनवीन विषयांवरती चिंतन करतात। सध्या हवामानामुळे आणि जलवायू परिवर्तन जे होत आहे, या हवामान बदलामुळे ज्या अडचणी निर्माण होत आहे शेतकऱ्यांना, त्यावर इथे चर्चा होणार, म्हणून याला क्लायमेट स्मार्ट ॲग्रोनॉमी असं नाव दिलेलं आहे। क्लायमेट स्मार्ट ॲग्रोनॉमी या चर्चासत्रात नुसता क्लायमेट तर नव्हे, पण क्लायमेट कशा प्रकारे त्याचा दुष्परिणाम किंवा परिणाम शेतीवर, शेतीजन्य अन्य उद्योगांवर सुद्धा कसा पडतो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्या कुठल्या अडचणी येतात, त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी काय तरतुदी होऊ शकतात, राष्ट्रीय पातळीवर हे संमेलन आहे। याचा संबंध फक्त गोव्याशी नसून संपूर्ण भारत देशाशी आहे आणि या 3 दिवसीय अधिवेशनामध्ये ते रेनफेड कृषी असू देत, वर्षा आधारित, किंवा बागायती म्हणजे इरिगेटेड शेती असू देत, किंवा हिली एरियाची शेती, किंवा डेझर्टमधली शेती, किंवा अन्य ठिकाणची तटीय भागातली कोस्टल ॲग्रिकल्चरची शेती, सर्व शेतीविषयांवरती इथे चर्चा होणार। या चर्चेमध्ये आता पर्जन्यमानामध्ये बदल होतो। असं म्हणतात की भारत देशात कृषी केल्यामुळे गॅसेसचं उत्सर्जन फार होतं, ते होतं किंवा नाही याचीसुद्धा चर्चा होईल आणि जर होत असेल तर त्याला कमी कसं करायचं याबद्दल नवनवीन नवाचार जे उद्भवतात त्यांना शेतकऱ्यापर्यंत कसं पोचवायचं याबद्दल विस्तृत चर्चा करण्यात येईल। या 3 दिवसीय अधिवेशनामध्ये गोव्यासाठी आणि संपूर्ण तटीय क्षेत्रासाठी एक विशेष सत्र आयोजित करण्यात येत आहे, ज्याच्यामध्ये पूर्वी तटीय क्षेत्र आणि पश्चिम तटीय क्षेत्र, ज्याच्यामध्ये गोव्याला आपलं जे ICRचं संशोधन केंद्र आहे, ज्याला आपण सेंट्रल कोस्टल ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणतो, त्यांच्या विद्यमाने संपूर्ण कोस्टल एरियामध्ये कुठकुठल्या अडचणी आहेत आणि त्या अडचणीवर मात देण्यासाठी कोणकोणत्या टेक्नॉलॉजीज उपलब्ध आहे त्याची चर्चा करणार। पण नुसतं ही चर्चा काय अडचणी आहे आणि काय टेक्नॉलॉजी आहे इतक्यापुरती मर्यादित नसून हे ज्ञान कसं शेतकऱ्यापर्यंत घेऊन जाणे नंबर 1, दुसरं हे ज्ञान आपल्या ज्ञानकोशात घेऊन जाणे, लिटरेचरमध्ये घेऊन जाणे, ज्ञानकोशात घेऊन जाणे हा एक दुसरा मुद्दा, आणि तिसरं या ज्ञानाला आपले जे आता युवक मंडळी येत आहे, नवीन तरुण पिढीतले जे तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक येत आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल। आणि म्हणून जास्तीत जास्त प्रमाणात तरुण पिढीचे जे तज्ज्ञ आहेत, विशेषज्ञ आहेत, त्यांना इथे आकर्षित करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग इथे आहे। एवढंच नव्हे तर PhD आणि MSc करणारे जे विद्यार्थी इतर विद्यापीठातून आलेले आहे त्यांचाही इथे सहभाग आहे। त्यामुळे सर्वकष पद्धतीने या सस्य विज्ञानशास्त्रावरती संपूर्ण विचार करून नवनवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि त्याचप्रमाणे पॉलिसी मेकरपर्यंत, कारण या 3 दिवसीय सत्रानंतर जे काही चर्चा होईल त्या आधारे काही शिफारशी काढण्यात येईल। 9-10 चांगल्या सटीक अशा शिफारशी यातून निर्माण होतील आणि या शिफारशींना वेगवेगळ्या राज्याच्या सरकारांना पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल। त्याचप्रमाणे भारत सरकारला सुद्धा या शिफारशी पोचवण्यात येतील आणि त्या शिफारशीप्रमाणे त्यांना त्यांच्या पॉलिसीमध्ये काय बदल घडवता येतील त्याचासुद्धा विचार करण्यात येईल। याबद्दलची त्यांना शिफारस करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे बदल घडवून भारतीय शेतीला एक नवी चालना देणे आणि नव्या पद्धतीने तरुण पिढीच्या माध्यमातून नवाचाराचा वापर करून भारतीय शेतीला नवीन पद्धतीची शेती करणे हे शिकवण्याचा इथला हा उद्देश आहे। आणि त्यासाठी जिथे 550हून अधिक शास्त्रज्ञ गोळा झालेले आहेत आणि या उपक्रमाला तुमच्यासारख्या
प्रेसचा, मीडियाचा खूप साथ लाभतो आहे. त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे फार फार आभार, धन्यवाद. त्याचप्रमाणे गोवा सरकारचं मला फार त्यांचं कौतुक करावं असं वाटते की कायमस्वरूपी जेव्हा कधी इथे कुठलाही कार्यक्रम अशा पद्धतीचा आयोजित करण्यात येतो तर गोवा सरकार एक पाऊल पुढे येऊन नेहमी तयार असतात. आज महामहिम गव्हर्नर इथे आलेत, त्यांनीसुद्धा थोडंसं मार्गदर्शन केलं यांचं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे लोकांना खूप प्रेरणा मिळाली आणि त्या प्रेरणेच्या माध्यमातून हे आणखी नवनवीन काम भरभरून करत राहतील पुढे. त्यांना हे मोटिवेशन मिळालं. त्याबद्दल गोवा सरकारचे, राज्यपालांचे सुद्धा आभार आहे आणि तुम्हा सर्वांचे पण आभार व्यक्त करतो. फार फार धन्यवाद.